We are discussing the external ear, and in the external ears, this part is called as tragus. Opposite to this is antitragus. अभी मेरा कान खुद का abnormal है, तो I cannot tell you ऐसा आप लोगों का कान ऐसा है. उसमें this part is called helix, this part is called antihelix. Okay, so the question that is asked, लोब्यूल का नर्व सप्लाई क्या है? क्या है लोब्यूल का नर्व सप्लाई? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व. उसके अपर पार्ट का नर्व सप्लाई क्या है? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. ग्रेटर ऑरिकुलर और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व ये साथ साथ रहते हैं. एंगल ऑफ मैंडिबल इज सप्लाइड बाय ग्रेटर. लोब्यूल ऊपर का पार्ट. Now greater auricular and auriculotemporal, they run very close to each other. Auriculotemporal gives secretomotor fibers to which gland? Parotid gland. त्या शेवटच्या बेंचवरच्या पोरीला उठवा. Gives बर का, काय नाव तुझं? हा? तर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व सप्लाइज पैरोटिड ग्लैंड. अभी ये दोनों साथ साथ में है. ग्रेटर ऑरिकुलरी सप्लाई एंगल ऑफ मैंडिबल. तो कभी ऐसा वो लीजन हो जाता है एंड सम फाइबर्स of auriculotemporal nerve may get connected with greater auricular. तो जब भी आप खाओगे so I was talking about two nerves very close to each other. What are those two nerves? Greater auricular and तो यहाँ पे अगर कुछ कट इंजरी हो गया तो क्रॉस कनेक्शन. क्या होगा क्रॉस कनेक्शन? ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व फाइबर्स में यूनाइट विद ग्रेटर ऑरिकुलर. Now auriculotemporal nerve fibers get stimulated whenever we see pani puri, whenever we see pizza, whenever we see burger. और क्या? वेज आइटम ही बोलने का, खाली वेज है मेरे सामने. और हाँ कौन सा? कुछ तो बोलो. डोसा, पाव भाजी. और तो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व स्टिमुलेट हो गया, लेकिन वो जा रहा था पैरोटिड की ओर. ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व वाज गोइंग टुवर्ड्स पैरोटिड. But now it's because while the injury was getting healed, the fibers of auriculotemporal nerve have joined greater auricular. Okay, so whenever you see pani puri, you will not get saliva, you will get sweating at the angle of mouth. This is called as what syndrome? Fraze syndrome. Fraze syndrome. Okay. Now the next point, when we studied the auditory tube, we said that its lateral 1/3 was bony, medial 2/3 was cartilaginous. But when we talk about the external auditory canal, it's exactly opposite. Because ये laterally ये क्या है ये? Cartilage. So lateral 1/3 is cartilaginous. उसमें क्या था? Lateral 1/3 was bony in auditory tube. In external auditory canal, और मैं ऐसे कान में मैं साफ करके आया हूँ, don't worry. Lateral 1/3 is cartilage. Because ये याद रखो ना, ये cartilage है. And then next part is bony, 8 millimeter is cartilaginous. बोनी कितना है? 16. टोटल 24.
एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनाल, जोगदंड तुमच्या बाजूचा मुलगा, इधर आओ, इधर आओ. एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनाल इकडे येतो पुढे. एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनाल इकडे इकडे. काय नाव तुझं? हम लोग जब स्कूल में थे ना, आज इधर है, इधर है. दिख रहा है क्या बराबर? देखो शूटिंग में. हाँ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है. हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो ये जो है, व्हाट कार्टिलेज इज दिस? हाँ, इलास्टिक कार्टिलेज. ये खास टीचर लोगों के लिए बनाया गया है. आप लोग के टाइम, अभी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए टीचर लोग. किसी को पकड़ा था क्या कभी? किसको को पकड़ा था? हाथ ऊपर कर. अरे बहुत लोग हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ. तुमको किया था टीचर ने कभी? हाँ, एक ही बार. हाँ, ठीक है. तो भूल गया रहेगा ना, तो कैसा लगेगा? तो क्या नाम है आपको? भारत. ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत के कान पकड़ रहा हूँ. ये इलास्टिक कार्टिलेज खास टीचर लोगों के लिए बनाया है. और ये ऐसा मैं नहीं खींचता हूँ, ENT सर्जन खींचते. ENT सर्जन के पास जब आओगे, तुमको पनिश नहीं कर रहा हूँ मैं. हाँ, ENT सर्जन के पास जब आप जाओगे तो दे पुल योर एक्सटर्नल ईयर लैटरली एंड बैकवर्ड एंड अपवर्ड. कैसे? लैटरली, बैकवर्ड एंड अपवर्ड. ये डेमोन्स्ट्रेट करना था, पनिश नहीं. क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज एस शेप्ड. एस शेप है. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज एस शेप. व्हेन यू पुल इट बैकवर्ड, laterally and upward, it becomes straight. It becomes straight. उसको एस शेप क्यों रखा है? आप लोगों को आदत है ना, फिर वो पेन बिन रहेगा तो फिर जरा सा कुछ हो रहा है तो वो सीधा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज करोगे. इसके लिए गॉड हैज मेड इट एस शेप, सो दैट उसका डायरेक्शन आप पढ़ोगे ना, फॉरवर्ड, मीडियली, बैकवर्ड, फॉरवर्ड. इट इज एस शेप. इट बिकम स्ट्रेट बाय पुलिंग अपवर्ड, बैकवर्ड, लैटरल. ओके. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, आपने कभी उसके बारे में इतना सोचा भी नहीं रहेगा. भारत, इट्स एंटीरियर वॉल इज सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरेंजियल एंड पोस्टीरियर वॉल इज सप्लाइड बाय ऑरिक्युलर ब्रांच ऑफ वेगस. आमेच्या बाजूचा मुलगा मोबाईलवर काय बघतोय? पोस्टीरियर वॉल इज सप्लाइड बाय. तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पेशेंट मरेगा, मालूम है? मैं कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज. पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज सप्लाइड बाय ऑरिक्युलर ब्रांच ऑफ वेगस. ऑरिक्युलर ब्रांच ऑफ वेगस. क्या सिग्निफिकेंस है उसका? उसको अल्डरमैन्स नर्व बोलते हैं. ऑरिक्युलर नर्व, अल्डरमैन्स नर्व. जब भी आप पेशेंट के कान में वैक्स लगा है, पेशेंट के कान में वैक्स अगर लगा है और वो वैक्स निकालना है और आप गर्म पानी फ्लश कर रहे हो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ. क्या नाम है आपका? हाँ, सत्यम चौहान. कहाँ से? हाँ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश. तो पेशेंट के कान में वैक्स है. अभी वो वैक्स निकालने के लिए आपको फ्लश करना है. आपने अगर आज का क्लास मिस किया, या वो जो लड़का था, क्या नाम है आपका? सोहम की तरह आप टीचर सिखा रहे हैं और मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? आप उस दिन ENT OPD में गर्म पानी लोगे और अलोंग पोस्टीरियर वॉल फ्लश करोगे और पेशेंट तब तक ऐसा था, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ. Because posterior wall is supplied by vagus. Hyperstimulation of vagus can cause cardiac arrest. Vagus is parasympathetic. Sympathetic से क्या होता है? धड़ 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 धड़, वो धक धक करने लगा. इस sympathetic stimulation.
पॅरासिम्पॅथेटिक रिड्युसेस दी हार्ट रेट. तिकडे एक अजून शहीद झालाय का पोरगा तिकडे खोक्यात. तू आजा इधर अजून क्या नाम है तुम्हारा? मारेगा तुम लोग पेशेंट्स को दो चार. क्या बनता है मैं कौन गॉज है? नहीं गॉज की. ओके. So therefore the flushing of lukewarm water while cleaning the external auditory canal, you put the syringe along the anterior wall. You put the syringe along the anterior wall. Why? Because along the posterior wall, that it is now supplies by auricular nerve, it can cause excessive stimulation of vagus and person can die of cardiac arrest. मारलं असतोस तू एकाला. काय नाव तुझं? हा जोर काय वैभव? हा तसाच उभा राहा 2 मिनिट. ती पोरगी कसली सिन्सिअर होती. मी बाहेर एवढं 15 मिनिटं जाऊन आलं तरी ती उभं राहिली. काय नाव होतं तुझं? सृष्टी. आता बस. ओके. तो इसलिए आपने देखा रहेगा कुछ लोग कान में ऐसे कॉटन रखते हैं विद सम इरिटेंट और फिर हमको बताते वो क्यों लगा. नहीं वो वैद्य के पास गया था और उसने मुझे बोला कि ये इधर रखोगे तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा. कैसे इंप्रूव होगा डाइजेशन? दैट गर्ल. हाँ तू स्टैंड अप. हाँ हाउ विल डायजेशन इम्प्रूव? तू नाही ग. काय नाव? शर्वरी. हाँ बोला. कैसे होगा इम्प्रूव डाइजेशन? उधर कॉटन रखने से. बिकॉज वेगस गेट स्टिमुलेटेड along the posterior wall. Nerve supply of the posterior wall of external auditory canal is by auricular branch of vagus. So vagal stimulation होगा यहाँ पे. आपका जो फिजियोलॉजी में आपने सीखा है ना कि वेगस स्टिमुलेशन कॉजेस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. तो जो लोग का डाइजेशन वीक है, जो लोग का एसिड सिक्रीशन वीक है, दे जस्ट पुट अ कॉटन हियर विद द इरिटेंट. कॉटन हियर विद द इरिटेंट एंड दैट इम्प्रूव्स डाइजेशन. सो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो आपको इतना फालतू लग रहा था उसके ऊपर इतना कुछ पॉइंट्स है. एस शेप्ड है. ओके. उसके बाद आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये एस शेप में निकाल नहीं सकता मैं. जैसे भारत का कान पुल करके वो स्ट्रेट हो गया वैसे. नाउ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो आपने सोचा रहेगा कैसा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं रहता. इट इज लाइक दिस. आप लोगों को मैंने ये करके दिखाया था. किसके लिए किया था? एक्शन ऑफ लम्ब्रिकल्स. अभी मैं ऐसे कर ऐसे. मेरे इस कान का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसा रहेगा, इस कान का ऐसा. तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यहाँ पे. ओके. और वहाँ उसको मैं जब खींच के स्ट्रेट करता हूँ तभी मुझे जो मैं लाइट डालता हूँ आई सी अ कोन ऑफ लाइट फॉलिंग हियर ऑन द एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ओके. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 पार्ट्स होते हैं. उसके तीनों पार्ट्स पर का एक कनेक्शन है. तो कोन ऑफ लाइट जो लाइट गिरेगा किधर गिरेगा? काय नाव तुझं? ग्रे टी शर्ट. नाव काय तुझं? हा ते आता टी शर्ट कडे बघते मग माझाच ग्रे. यशस्वी. I appreciate your fight.
चला, काय यशस्वी काय आहे, अँटेरो इन्फिरियर पार्ट वरती लाईट पडतो, त्यांनी काय होतं, कोन ऑफ लाईट. पूर्ण टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन दिसत नाही, यू डोंट सी द फुल टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन, द लाईट फॉल्स ऑन द anterior inferior cone of light. Okay. Now this part here is pulled upwards by the handle of malleus. इधर malleus रहेगा. क्या है यहाँ पे? malleus. malleus long process, short process. Okay. malleus. फिर malleus के बाद होता है incus. Okay. फिर होता है steps. अभी मैं इनके एग्जैक्ट डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं. ओके. एंड स्टेप्स का होता है फुट प्लेट. ओके. सो मैलियस, देन इनकस एंड स्टेप्स. ओके. कॉपी भी मत करो, मैंने वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट डायग्राम है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स. So handle of malleus is attached here. This part जहाँ पे पीक है, मतलब ऐसा अगर मैं करता हूँ तो ये पॉइंट इज कॉल्ड एज अम्बो, UMBO, अम्बो, अम्बो. Tympanic membrane makes an angle of 55 degree with the horizontal. 55 degree ऐसे रहती है, 55 डिग्री. ओके. ऑडिटरी ट्यूब क्या सीखा था हमने? मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द sagittal plane and 30 degree with the in adults. In children it is तीन चीज बोला था मैंने. इट इज शॉर्ट, वाइड, हॉरिजॉन्टल. स्ट्रेट नहीं लिखने का, क्या लिखना है? वो तो स्ट्रेट ही होता है बट हॉरिजॉन्टल होता है. ओके. सर मला दाखवतात इंकस, इंकस. ऐसा ही है जैसा मैंने ड्रॉ किया है, बट थोड़ा सा और उसको ऐसा ऐसा कर सकते हैं. स्टेप्स हैज लाइक दिस. हाँ, मैलियस, इनकस, स्टेप्स. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं होता. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. ओके. इट्स लाइंग इन द टिम्पैनिक सल्कस. बट ये टिम्पैनिक सल्कस सुपीरियरली डेफिशिएंट होता है. ओके. सुपीरियरली डेफिशिएंट होता है. तू तुझ्या मागे बसलेला मुलगा, तुझ्या साईडला बसलेला मुलगा, हां, त्याला म्हणजे डोळे उघड, डोळे उघड. ओके. सो ये है टिम्पैनिक नॉच. काय नाव तुझं? हाँ, अनंत. आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्लास होने वाला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम देगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जगाया मैंने आज. सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फोल्ड्स होते हैं. These folds are called as malleolar folds. Anterior malleolar fold and posterior malleolar fold. बच्चे लोग, ये बहुत important point है, malleolar folds. So tympanic membrane has two parts. ये part is called as pars tensa. क्या है? उभा रहा. पार्स, काय नाव तुझं? हाँ, डिम्पल. पार्स टेंसा. ओके. और ऊपर का पार्ट है पार्स फ्लैसिडा. पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा. बस डिम्पल का. पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा. तो पार्स फ्लैसिडा क्यों रखा है?
there is always a purpose, क्योंकि यहाँ से एक nerve जाती है in close contact with chorda, with the tympanic membrane, and its name is chorda tympani. What is the name? Chorda tympani. What is chorda tympani? Branch of fascia. What is it carrying, chorda tympani? It is carrying taste for anterior 2/3 of tongue and secretomotor fibers for sublingual and submandibular. Secretomotor fibers, अपने सर को इन्फॉर्म किया क्या? Secretomotor fibers for parotid gland come via auriculotemporal. For submandibular, sublingual, they come via chorda tympani. For क्या हुआ? आता नहीं 9:30. आपने बाकी इन्फॉर्म किया ना, 2 बॉडीज निकाले. Stimulation fibers for the iris come from iris. आइरिस बड़ा छोटा होता है. आप पिक्चर के थिएटर में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है पद्धति? आइरिस डायलेट होता है. थिएटर के अंदर जाते हो तो डायलेट होता है, बराबर, बिकॉज लाइट कम है उधर तो डायलेट होता है. और सडनली आप थिएटर के बाहर आते हो पिक्चर देखने के बाद, तो फिर आजकल मॉल की वजह से ऐसा नहीं था. हम लोग के टाइम वो सिंगल स्क्रीन थिएटर होता था तो उधर से हम बाहर आते थे डायरेक्टली सूर्य प्रकाश में. सो देन द प्यूपिल इज डायलेटेड, तो उसको वापस तरह कंस्ट्रिक्ट होने को टाइम लगता है. तो ये सब कौन कर रहा है? डॉक्टर यादव, क्या नाम है आपका? बोला दिशा ना, दीक्षा, जानवी. हाँ बोलो. ओके, बैठो. So this all is done by which nucleus? Edinger-Westphal nucleus. Edinger-Westphal nucleus will give fibers to third cranial nerve, oculomotor nerve. Then oculomotor nerve gives a inferior branch. Okay, then वो इंफीरियर ब्रांच में से फाइबर्स कहाँ पे जाते हैं? कौन सा गैंग्लियन? सीलियरी गैंग्लियन. एंड देन वाया via which nerve? Nasociliary nerve. Via nasociliary nerve, the fibers will go to muscles of the iris and ciliary body. Muscles of the iris and ciliary body. Okay? So nucleus का नाम क्या है? क्या नाम है? Edinger-Westphal nucleus. So oculomotor has 2 nucleus. 3, 4, 6 में it's only oculomotor which has 2. बाकी सबको एक है. 3, 4, 6 have their own motor nucleus. But oculomotor is part of parasympathetic outflow. So it has Edinger-Westphal nucleus. This gives fibers to enter oculomotor nerve. Then its inferior branch. Oculomotor nerve has a superior branch which supplies superior rectus and levator palpebris superioris, and inferior branch which supplies inferior rectus, inferior oblique and medial rectus. Okay, उसमें से then the fibers are given to the ciliary ganglion. Okay, and then nasociliary nerve through nasociliary nerve. So nasociliary nerve is closely associated with the ciliary ganglion, but fibers are coming from. Okay.
कहाँ ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए? कॉर्डा टिम्पैनिक। ओके, सो आपको 3 चीज याद रखना है. Superior part we should not give any cut in the tympanic membrane. Why? Cauda tympanic. Okay. Now बाकी के 2 parts, anterior inferior and posterior inferior. सुपीरियर तो अपना आउट ऑफ क्वेश्चन है, उधर टच ही नहीं करने. एंटीरियर इंफीरियर का सिग्निफिकेंस क्या है? कोन ऑफ लाइट. और पोस्टीरियर इंफीरियर का सिग्निफिकेंस इज इंसिजन. आपको इंसिजन लेना ही है, लेना ही पड़ रहा है. अंदर इतना पस जम गया है कि वो पस मारी ना तभी एक का वो इतना पस जम गया है अंदर कि वो पस काय नाव काय तुझं? हाँ, काय नाव आहे? समाधान. मी आता सगळे रेकॉर्ड करते. समाधान नाराज होऊ नको रे, महत्वाचं शिकवताय. इथं निक घेतला जातो कुठल्या पार्ट वरती? खुरपा. कुठल्या पार्ट वरती निक घेतला जातो? कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट. तो तीनों पार्ट के मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सुपीरियर पार्ट कॉर्डा टिम्पैनिक. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. उधर जो तुम लोग सो रहे ना लेक्चर में, जाके इधर लोगे निक पस ड्रेन करने को. फिर क्या होगा? पेशेंट का टेस्ट भी चला जाएगा एंटीरियर टू थर्ड का, और सलाइवेशन भी कम हो जाएगा. सोचो तुम्हारा एक डुलकी की वजह से, एक डुलकी की कीमत तुम क्या जानो. एंटीरियर इंफीरियर पार्ट कोन ऑफ लाइट, पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट क्या? वेयर यू टेक अ इंसिजन फॉर ड्रेनिंग द पस इन द. बरोबर बोलतोय का मी रोहित? बघ परत त्याच्या अप्लाइड अॅनाटॉमी मध्ये लिहिलं असेल. बिकॉज दिस इज द पार्ट विच गेट्स मोर टेन्स्ड, मोस्ट टेन्स. शेवटचा पॉइंट आहे बघ तुमच्या टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन नंतर. शेवटचा पॉइंट. हा जरा हा वाचून दाखव. मोठ्याने वाच, जवळ घे. The membrane is sometimes incised to drain pus present in the middle ear. Procedure is called myringotomy. The incision for myringotomy is usually made in posterior inferior quadrant of the membrane where the bulge is most prominent. In giving an incision, it has to be remembered that the chorda tympani now runs downwards and forwards across the inner surface of the membrane, lateral to the long process of incus but medial to the neck of parieolus. तो सब लोग मेरे को वचन दो कि आप किसी पेशेंट का कॉर्डा टिम्पैनी डैमेज नहीं करें. अब सो द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दैट, अभी हमने एक्सटर्नल ईयर से शुरुआत किया, फिर हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में गए, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे गए. सोचो हम कान के अंदर गए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखा, तो हमको जब एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में से आप हनी आश्रम द किड्स की तरह अंदर घुस गए तो कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स दिखेगा या कॉन्केव दिखेगा? हाँ, कॉन्केव दिखेगा, बिकॉज वो अंदर के साइड पे ऐसा. किसने पुलअप किया है उसको? हैंडल ऑफ मैलियस. एंड विच मसल पुल्स द हैंडल ऑफ मैलियस? टेंसर टिम्पैनी. विच मसल? टेंसर टिम्पैनी. देयर आर 2 muscles. There is malleus, incus, stapedius. Attached to malleus is one muscle, its name is tensor tympani.
उसकी वजह से वो ऐसा है, उसकी वजह से अम्बो है, अम्बो, अम्बो। ओके, वैष्णवी, अम्बो का है, इट इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम convexity when seen from the inner side, or maximum point which is pulled up. बरोबर की नाही? प्रगतीच्या पुढची मुलगी, काय नाव तुझं? नाव काय तुझं? हा तूच हा, डिम्पल डिम्पल डिम्पल। तो अभी तक सेकंड टाइम तेरा नाम लिया आज के लेक्चर में, ऐसे ही नाम नहीं लेता किसी। ओके, अम्बो। सो अभी हमको अंदर जाना है मिडल ईयर में। कहाँ पे इंसिजन लेगी डिम्पल? हाँ, विच पार्ट विल टेक द इंसिजन? हाँ, 1 सेकंड। आपको समझा ना, मेरे को किसका फोन आया रहेगा लेक्चर के बीच में, मैं पॉज करके फोन लिया मतलब। हाँ, आपको भी समझेगा 10 साल बाद। Now we reach the middle year. Middle year, सेकंड टाइम तुझ्याबरोबर कॉम्पिटिशन नाही। काय नाव तुझं? हा, सृष्टी। तुझं किती कौतुक केलं मी सृष्टी, 15 मिनिटं उभा राहिली होतीस तू। मुझे मालूम है सब आप लोग कल नाच के आएंगे, किधर वो आ रहे थे, उसका हमको भुगतने पड़ता है। बैठो, तुम्हारा कुछ फॉल्ट नहीं है उसमें। मिडल ईयर कैविटी के दो तरह के व्यूज हैं, अभी मैं आपको एक कॉमन डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूं कि एक व्यू मीडियल टू लैटरल, ऐसे एक्सटर्नल ईयर। ओके, देन सृष्टी हा पॉइंट काय आहे? काय? अम्बो। ओके, फिर ये मिडल ईयर है। ये दो चीज क्या है? हाँ, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, and then is inner ear. Round window is closed by secondary tympanic membrane. Secondary tympanic, अच्छा इधर एक tympanic membrane है, इधर एक है, इसका नाम क्या है? Secondary tympanic membrane। और यहाँ पे oval window is closed by footplate of steps। ओवल विंडो टू राउंड विंडो। ओके, यहाँ पे पेरीलिम्फ होता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है, देन हैंडल ऑफ मैलियस, देन इनकस, देन दिस स्टिमुलेट बोनी कॉक्लिया। यू हैव स्टडीड बोनी कॉक्लिया। Now another view I am giving you in this is, आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से, ये आप कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करोगे डायग्राम, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप ऊपर से देखोगे तो पीछे के साइड यहाँ पे दिस इज लैटरल, दिस इज मीडियल, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर। पीछे के साइड यहाँ पे है मैस्टॉइड एंट्रम, और आगे के साइड देयर इज कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी,
जिसके नीचे ऑडिटरी ट्यूब है, मतलब ये ऐसा है, ये कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी, उसके नीचे ऑडिटरी ट्यूब. तो टू मेक थिंग्स इजी, इफ आई टेक अ सेक्शन लाइक दिस, ऐसा सेक्शन लिया, so then what I see is, I see canal for tensor tympani, anterior to posterior section, auditory tube, mastoid, double barrel pistol. हमारी जेल में पिस्तौल, कौन से मूवी का डायलॉग? शोले. कौन बोल रहा शोले? हाथ वरती करा ना, तू बोला ना. क्या बात, क्या नाम है तुम्हारा? ओएस. और पीछे कौन बोला? क्या बात, क्या नाम है तुम्हारा? गणेश. हाँ, गणेश. तो गणेश आणि ओएस के लिए ताली बजाओ. उन्होंने एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन काट सकते जो आप लोग को मालूम नहीं. हमारी जेल में पिस्तौल, किसने बोला था डायलॉग? असरानी. ओके. डबल बैरल गन. सो पोस्टीरियरली इज mastoid, here is middle ear, and anteriorly are three things: canal for tensor tympani, auditory tube, and a plate of bone which separates it from internal carotid artery. So anteriorly three things. मेरा नॉर्मली सिखाने का एक ऐसा तरीका है, मैं ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं सिखाता हूँ. हाउ टू राइट द आंसर. मिडल ईयर, लोगों को ना पसीना छोड़ता है मिडल ईयर सुन के. मिडल ईयर कोई लिखता नहीं उसको. रूफ इज फॉर्म बाय tegment tympani which separates it from middle. पकड़ा तेरे को मैं. फर्स्ट बेंच. क्या नाम है तेरा? खड़े रहो. काय नाम? ओम. तू वही कर रहा था क्या? सो रहा था. बैठ. फाइट मार रहा था. अप्रिशिएट दैट. सृष्टि, डिम्पल, ओम, भारत और कौन? वैभव. कुछ वैभव शुरुआत. हाँ, वैभव और हाँ अनंत. समाधान. हाँ, समाधान. Tegment tympani which separates it from middle cranial fossa. बस. Inferiorly is a small plate of bone. बस. Inferiorly is a small plate of bone which separates it from internal jugular vein. देखो यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन ऐसे जाएगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऐसे. बस ना जोगदंड. बस ना. इंटरनल कॅरोटिड आर्टरी. तुझे मी लाड करतो कारण तू पहिला आला होतास म्हणून. हे दोन्ही साईडला आहे आणि याच्याबरोबर वेगस नाव असणार आहे. कैरोटिड शीट का कंटेंट. तो यहाँ पे ये दोनों साथ में आ जाते हैं. वेगस मैंने दिखाया नहीं. ये है हमारा प्रयाग किधर है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस. और ये वेगस अभी इसमें नहीं निकालना है. तो इंफीरियर वॉल ऑफ श्रद्धा स्लाइटली असं केलं जातं. Inferior wall is a thin plate of bone which separates it middle ear from internal jugular vein. Superiorly is a thin plate of bone called as tegment tympani. शर्वरीच्या बाजूचा मुलगा. जिम वाले काय नाव तुझं?
Huh? Shreyas. Thin plate of bone which separates it from middle cranial fossa. Tegment tympani separates middle ear from middle cranial fossa. Anteriorly 3 है. ऊपर नीचे खाली सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर है. ओए चर्चा तिकडे बंद करा चर्चा सब. ऊपर नीचे खाली सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है ऊपर का मिडल क्रेनियल फोसा पर इंटरनल जुगुलर वेन से. ओके. अँड जाऊ दे, तुझं नाव विचारत नाही, डोंट नो. अँटिरियरली 3 गोष्टी असतात. काय? कॅनल फॉर टेन्सर टिम्पॅनी, ऑडिटरी ट्यूब. काय नाव तुझं? हाँ? ध्रुव. वो सोया नहीं था लेकिन उसके आंखों का वो सब वेजो कंस्ट्रिक्शन, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन दिख रहा था मेरे को. Now middle wall में there will be 2 structures. medial wall sir. medial wall में ये 2 दिखेगा. क्या है ये? oval window, fenestra vestibula, fenestra cochlea. और एक medial wall में स्ट्रक्चर दिखता है that is called as promontory. It is just elevation caused by the basal turn of cochlea. बोनी कॉक्लिया एक टर्न यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, प्रोमोटरी. सो मीडियल वॉल में 3 चीजें, प्रोमोटरी, ओवल विंडो, राउंड विंडो. ओके. ओवल विंडो, राउंड विंडो. एंटीरियरली 3, canal for tensor tympani, auditory tube also called as pharyngotympanic tube, also called as eustachian tube, and a thin plate of bone separating it from internal carotid artery. वहाँ पे carotid और tympanic nerves होते हैं. posteriorly उसको मैं P1 लिखता हूँ. चलो इसको लिखता हूँ M1, M2, M3, A1, A2, A3. posteriorly P1, auditus of mastoid antrum. auditus of mastoid antrum. यहाँ पे mastoid antrum ओपन होता है. दूसरा P2 इस पिरामिड जहाँ से स्टैपेडियस ओरिजिन लेता है. टेंसर टिम्पैनी यहाँ से ओरिजिन लेता है, स्टैपेडियस यहाँ से ओरिजिन लेता है. स्टैपेडियस जाके इस पे इंसर्ट होता है, स्टैपेडियस पे स्टेप्स पे, dampens the pulsations. ओके. और तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए आई विल हैव टू ड्रॉ द लैटरल वॉल. लैटरल वॉल में क्या रहेगा रे मिडल ईयर के? हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये लैटरल वॉल है, ये मीडियल वॉल है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. और फिर ये क्या है? कॉर्डा टिम्पैनिक. ये इसका एंटीरियर कैनालिकुलस है, ये इसका पोस्टीरियर कैनालिकुलस है. तो ये पोस्टीरियर कैनालिकुलस जरा सा ऐसा पीछे होता है, इसके लिए उसको P3 में इंक्लूड करते हैं अपन. सो इन द पोस्टीरियर वॉल 1 is auditus for mastoid antrum, 2 is pyramid, and 3 is the posterior canaliculus for chorda tympani. posterior canaliculus for chorda tympani. ओके. तो लिहितोय का एवढा सिन्सियरली? भारतच्या बाजूचा मुलगा लिख रहा है तू इतना, फिर इतना झुका हुआ क्यों है तू? ओके. नाउ L1 is tympanic membrane, L2 is chorda tympani, L3 is anterior canaliculus for chorda tympani. ओके. L1, L2, L3 लैटरली 3 स्ट्रक्चर्स. सुपीरियरली कुछ नहीं, S1. इन्फीरियरली I1. तुझं नाव काय मुली? हाँ हाँ, श्रुती. त्याचमुळेच तू एवढं अटेंटिव्हली ऐकतेस.
एकदाही तिने डुलकी घेतली नाही तर श्रुती कंटिन्युअस अशी बसली. तर now I'm just going to say a shortcut and you have to tell me what is that. We are talking about walls of middle ear. मेश्राम. काय नाव तुझं? मेश्राम फर्स्ट नाव काय? संयुक्ता. संयुक्ता किती वॉल्स असतात मिडल इयर मध्ये? टोटल वॉल्स. शर्वरी, क्रिश, तीन बत्ती. नाही. तुझं नाव काय? हां, तो संयुक्ताच्या पुढचा मुलगा. हां हां, नाव काय तुम्हाला? श्रेयसच्या बाजूचा ग्रंथ. ग्रँड रोड. तीन बत्ती वाला लड़का किधर? हाँ, एब्सेंट. क्या नाम है उसका? ऋतिक्ष. एक बॉक्स के अंदर कितना सरफेसेस होता है? बॉक्स के अंदर पेपर. हाँ, 6. So this has 4 walls, roof and floor. Roof R1 या S1. What is it formed by? Floor or I1 formed by thin plate of bone which separates it from internal jugular. Anterior wall, how many structures? What are they? A1, A2, auditory. A3, thin plate of bone separating it from internal cavity. Posterior wall, P1, auditus of mastoid antrum. Mastoid antrum opens here. P2, pyramid. Pyramid from which your muscle takes origin? P3, posterior canaliculus for medial wall. M1, promontory, which is formed by basal turn of cochlea. M2, fenestra vestibula, fenestra cochlea. और भी बहुत कुछ रहता है. आपको लगेगा मेरे को आता नहीं है. यहाँ पे ऐसा प्रोसेसेस कॉक्लियोफॉर्मिस होता है, पोस्टीरियर वॉल में फोसा इंक्लडस होता है. वो सब मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ. मैं रोटी का पड़ा और मकान पास होने के लिए क्या करना चाहिए. ओके, बाकी आपको डिटेल्स लेक्चर होगा तभी आप मेरे को थैंक यू बोलोगे. जो मिडिल ईयर पे जो भी लेक्चर लेगा ना तभी आप थैंक यू बोलोगे. अदरवाइज सोचो ये मिडिल ईयर आपको कोई एक बार आके सिखा के जाएगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द ओरिएंटेशन. नाउ यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर व्हेनेवर द टीचर टेक्स द लेक्चर. और यही मेरा जॉब है कि मेकिंग फैसिलिटेटिंग थिंग्स फॉर द नेक्स्ट टीचर. बिकॉज पोर्शन आप एक टाइम पे सिखा के एनाटॉमी में मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं. एक ने किसी ने आइडिया दिया, फिर दूसरे ने सिखाया, वापस डेमो में. L1 lateral wall, L1 सबसे इम्पोर्टेंट टिम्पैनिक में. L2, L3 anterior bars. Applied anatomy, infection of middle ear is called as otitis media. Otitis media. उसको बोले 5 मिनट का ब्रेक देंगे बच्चे लोग, सोने दो उनको 15 मिनट इज्जत से. 15 मिनट बाद बोलो, 15 मिनट बाद. और वो अरे रुको भाई, आपने ताली बजा के लेक्चर खत्म किया, उसकी वजह से आपका एक आध MCQ जा सकता है, एक आध लॉन्ग क्वेश्चन जा सकता है. मैं कुछ बता रहा था आप लोग. इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर इज ओटाइटिस मीडिया. आपने ताली बजाया तो इसके बाद में सिखाऊंगा नहीं, बट आप पढ़ लेना.